Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of taste reception. Dear students, the sensation of taste can be grouped into 5 primary types. These are the salty, sour, sweet, bitter, and umami tastes. All these perceived tastes combine to form a variety of tastes that are composed of all the combination of all these basic or primary types. Dear students, a taste cell expresses only a single type of receptor. Humans have about more than 30 different types of receptors for the perception of bitter taste. However, there is only one type of receptor for sweet and umami tastes. The reception of sweet, umami and bitter tastes is involved with a G protein linked receptor, while the receptors for salty and sour taste are ion channel proteins. Now we shall discuss the mechanisms of reception of these tastes. First, we shall discuss the salty taste reception mechanism. The salty stimuli readily dissociate into their respective ions. For example, sodium chloride is a salt that readily dissociates into its ions, sodium and chloride ions. The sodium ions enter the taste receptor cell through specialized sodium channels, which are called the amiloride sensitive sodium channels. As a result, depolarization is produced. Now we shall discuss the mechanism of sour taste reception. The sour stimuli have excess hydrogen ions. These ions either act through the opening of sodium channels or by blocking the potassium channels. In both these cases, depolarization of membrane is induced. Now, we shall discuss the mechanism of sweet taste reception. When a sweet compound binds to its receptor, a G protein is activated. This G protein, in turn, activates adenyl cyclase that forms cyclic AMP. As a result, the concentration of CAMP is increased. This results in the closure of potassium channels in the receptor membrane. The closing of potassium channels depolarizes the receptor. Now we shall discuss the mechanism of bitter taste reception. A bitter substance, for example, quinine, binds to the receptor and activates a G protein. The G protein is coupled with phospholipase C. This phospholipase C converts PIP2 into inositol triphosphate. The inositol triphosphate causes the release of calcium ions from intracellular stores. आपको पता है कि calcium ions स्टोर होते हैं इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इन स्टोर्स में से कैल्शियम आयंस बाहर आते हैं और एज ए रिजल्ट दे कॉज depolarization of the membrane.
Now we shall discuss the mechanism of umami taste reception. Dear students, the receptors for umami taste were discovered recently in the year 2000. This taste is commonly called as savory or delicious. हम आम जुबान में इस टेस्ट को जो पहचानते हैं वो चाइनीज साल्ट के तौर पर पहचानते हैं, which is naturally present in meat and cheese. इस उमामी टेस्ट के पीछे जो मॉलिक्यूल है that is called monosodium glutamate or the amino acid glutamate. जो इस मोनोसोडियम ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं, दे आर आल्सो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स विच आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स. यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक उमामी टेस्ट को इसकी अलग हैसियत रिकॉग्नाइज नहीं की जाती थी, बल्कि इसको स्वीट टेस्ट ही समझा जाता था. लेकिन जब से ये रिसेप्टर्स डिस्कवर हुए हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट के, तो उमामी टेस्ट को फिफ्थ प्राइमरी टेस्ट समझा जाता है. जब ये कोई भी उमामी टेस्ट रखने वाला सब्सटेंस अपने रिसेप्टर पर रिसीव होता है, तो एज ए रिजल्ट एक जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है which induces a cellular cascade involving cyclic AMP and release of calcium ions, जैसा कि आमतौर पर जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म में होता है, और एज ए रिजल्ट डीपोलराइजेशन इज इंड्यूस्ड. Dear students, in all cases of these taste receptions, when depolarization is produced, as a result, cells generate action potentials and release of neurotransmitters occurs. The neurotransmitters propagate the signal to the nervous system. Dear students, all taste receptors are neurons and they generate action potentials. But they have no axons, so they cannot themselves transmit signals into the nervous system. So they synapse with the neurons of 7th, 9th and 10th cranial nerves, that is the facial, glossopharyngeal and vagus nerves, जो कि इस मैसेज को कैरी करती हैं to the central nervous system. Dear students, ये तीन नर्व्स जो हैं, इनके अंदर बहुत सारे एक्सोन्स होते हैं, और इन एक्सोन्स के थ्रू तमाम मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट के मैसेजेस कैरी किए जाते हैं टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऐसा किस तरह से मुमकिन है? ऐसा एक स्पेशल मैकेनिज्म जिसे कहते हैं लेबल्ड लाइन कोडिंग, इसकी वजह से मुमकिन है. ईच रिसेप्टर सब टाइप, मुख्तलिफ सब टाइप्स जो हैं रिसेप्टर्स की, जो मुख्तलिफ टेस्ट रिसेप्शन के लिए हैं, they are connected to a particular set of axons in the nerve. In such an arrangement, the information about a taste, for example sweetness, is carried by a specific subset of axons. इसी तरह से स्वीट के लिए अगर एक सबसेट स्पेशलाइज्ड है, तो बिटर के लिए एक और सबसेट उसी नर्व के अंदर स्पेशलाइज होगा. इस तरह के पैटर्न को लेबल्ड लाइन कोडिंग कहते हैं.